Drug abuse has become a serious issue affecting countless lives, especially among the youth, with usage steadily rising over time. The NGO Active Bengaluru Foundation is tackling this challenge in Bengaluru's slum areas through its Path to Salvation initiative. Today, we are joined by Syed Mehran, one of the volunteers, who will shed light on how drug abuse is spreading in these communities and discuss effective ways to address this growing crisis. Thank you so much for joining, firstly. Uh, can you first tell us what is this A Path to Salvation? What is this project all about, and how did it come about to existence? Okay, so 6 months ago, we all like our team Active Bangalore. I am a volunteer from Active Bangalore. So we sat together. We were getting a lot of requests because we work on health cases more in Active Bangalore. So we were getting a lot of क्या बोलते हैं, information that there are a lot of drug abuse and there are a lot of deaths happening. And personally, for me, but the place where I was staying, my friends from there, like one of the friends from there, he died of overdose. I am not no more in that area, but the thing is later, maybe after a week, I got to know that he died out of overdose. So I was like, he was a pretty good friend and good contributing youth in my area. So I was like very shocked with that. So I was like, this is quite serious. Then we got involved with a lot of areas and the communities there and got to know that this is rapidly happening like the drug abuse. And the thing is there are like the means initially there were like big what we used to listen about the drugs like cocaine or MDMA or Growing, yeah. ganja, etc., heroin. But now the thing is, it is not that. It is like they have made it very accessible. It is like a small tablet, Tidal, where you just dilute it in a water and inject it to your inject it. So then we started saying that how first we need to understand what is the landscape and which what we are dealing with. So we went extensively. We spoke to communities. Then we got to know that this is the problem, the tidal, and the problem is very rampant. And the thing is, there's and also the thing is the people who are utilizing it, it is more like it is increasing day by day. It is increasing, and the thing is, the people who want to exit from it is very less number. Like it is, and they don't know the means of it. Also, if they want to get out of this thing, and they don't know the means of where to go, what to do, They and don't have any some say, resources yeah, accessible. resources, yeah, because it is mostly it is from slums in and Hmm. around Bangalore, so they don't know about it. So we said we need to dissect this problem into the multiple levels because there is the people who are utilizing it. They have become kind of pro in that, and they are Abusers, right? yeah, and then they are getting involved in peddling. Like initially, what was happening? Initially, when we used to listen about drugs, it was not a new. It is not a new thing in Bangalore, anywhere Yeah. in India. It is not a new thing. But peddlers were always from outside the community, like somewhere like sometimes many times there are foreigners who are coming and who are dwelling and people not from the same area Hmm. particularly. But this Localized was, from the. yeah, no, though this was localized, peddling was localized to that level that people from that youth from that area were getting involved I've and selling to the people, marketing to the people they know, the youth peers. So this is a big problem. Then the one is the people who are utilizing it and they've just started taking the drug and they're involved. And then the people who are in the verge of taking the like in their peers, like they're not involved yet, but the thing is they are because of the situation, the stress and the whatever the family problems, because it is not so ideal in being in slum. Like they have multiple yeah. level of family problems, and then we're like there should be some work on prevention. There should be some work on क्या बोलते हैं working on Awareness de-addiction of it. about. Yeah, yeah, the multiple levels. So we started with awareness of the program. So with the awareness of the program, we met multiple people in the area. Then we said we should have this awareness programs with the mothers of this kids in this slum So because they parents. get yeah, parents, so they know that they will come to know there is a pattern in once you enter the
utilizing What? of drugs. Yeah. Like you wear full sleeves t-shirts and your eyes are always red. You don't sleep in the night and you're like you talk very weirdly. Then if you know it, if you They can find it, recognize the signs. yeah, if you find it little early, then it will be very much helpful to get out of it, because else you will, if you take it for a long time, your body is like dependent on it, and it is very difficult to get out of it. So that was one thing we started, and in that series we got to know there are some problem inside the areas. There are like क्या बोलते हैं streets, क्या बोलते हैं, which are dark, which Hmm. doesn't have street lights. Because of that darkness, people start peddling there because it is dark and people don't go there. It is Spots where they inaccessible. can But buy yeah, and yeah, exchange yes. So there are autos like standing, instead of standing in the like auto rickshaw stand. yard, they're Yeah. standing in the gullies, and in that the gully, the boys are sitting in that autos and injecting themselves. So there are this avenues available for They've the kids to access. recognized all the things how in a community people are using drugs, how they get access Yes, to it, and then yes, you have yes, started preventing it. yes. So, what were the common causes that you found for the drug abuse, at least in these slum areas that you were working in? So mostly it was because of the it is about one is FOMO. Like people have someone is taking drugs, they're acting cool, like it is like they are having, Peer and the thing is, pressure. So, yeah, peer pressure, and sometimes it is more of because it has become localized. hmm, People who I know is marketing about it, hmm, and like drugs लिए तो मतलब you will be क्या बोलते हैं, your stress will go away, all those marketing gimmicks tactics happening. It is, and also the thing is, see, initially when we see from maybe from like my teenagers are listening about drugs, people getting utilizing drugs, but the thing is, there was a societal क्या बोलते हैं, pressure on the people who are like utilizing drugs. But the thing is here, people have become so busy in their lives, and they're like there is no societal pressure happening. There is no society pressuring that okay, okay, this he is the drug क्या बोलते, peddler in our area. You like initially what was happening was they used to, it was wrong, but they used to beat him, beat him, and they used to give क्या बोलते हैं, they used to take him to the police station, and those things were happening. hmm. But after this but because the society was also very क्या बोलते हैं, not so attentive about it, it started क्या बोलते हैं, getting अब ingrained with the बेसिकली लोग आसपास देख नहीं रहे और yes. कॉमन कर दिया कि अच्छा हाँ, पता है हाँ, बट हाँ। देख नहीं रहे. अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मतलब लोगों की, मतलब कौन गली में कौन बैठ रहा है, किस लिए बैठ रहा है, रात रात भर लड़के बैठ रहे हैं, नथिंग हैपनिंग, लाइक Hmm. वो चला गया था, मतलब वो एक सोसाइटल जो ये होता है ना, विजिलेंट विजिलेंटी, जैसे लोग विजिलेंटी, देखते हैं हाँ, यूजुअली अपने हाँ, हाँ, सराउंडिंग्स में. तो वो बहुत कम हो गई थी. देन उसके बाद में लाइक देयर आर लॉट ऑफ सच रीजंस, मोस्टली बिकॉज ऑफ द प्लेस दे आर कमिंग फ्रॉम. बीइंग इन स्लम, लाइक बच्चों को उनका बहुत सारा प्रेशर रहता है, उनका बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो उससे निकलने के लिए जस्ट टू गेट आउट ऑफ इट, and they don't have much things now. For example, if slum will not have a park, for Yeah. example, slum will not have a playground where they can Even go and play, yeah. and they are youth, they want to use their energy somewhere, हाँ. but there are no such avenues to Hmm. many of the slums in Bangalore. Uh, तो बहुत सारे reasons हैं ऐसे जिससे people get like youth get Start involved in drugs. using drugs. So ये Hmm. मोस्टली 18 से 25 या उस एज में था या इज देयर अ डिफरेंट एज ग्रुप दैट यू रिकॉग्नाइज इन दिस? अब हम लोग ने तो 15 से भी देखा है, मतलब 15 साल से भी कम की उम्र से भी हम लोगों ने मतलब बहुत सा मतलब ड्रग अब्यूज को देखा, एंड या इट वाज बिटवीन यू कैन से 15 to 25 वेरी के यंग. बीच में, ये फेयरली यंग, या ऑल्सो जब भी ड्रग अब्यूज होता है तो यहाँ पे इनका मेनली बिहेवियर, बॉडी, फिजिकल, मेंटल हेल्थ अब कैसे कॉमनली अफेक्ट हुआ है आप लोगों की स्टडी के अकॉर्डिंगली? पहले तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज उनके घर
डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब उनकी फैमिली, बट द फर्स्ट पीपल हु फेस द कॉन्सिक्वेंसेस आर द फैमिली, द इमीडिएट फैमिली, द मदर फादर एंड घर में कोई है। सिबलिंग्स वगैरह, तो हाँ। या हाँ, वो वही है। और द थिंग इज इट इज नॉट, मतलब ड्रग इज नॉट सो चीप आल्सो दैट दे आर नॉट अर्निंग फर्स्ट ऑफ या ऑल, हाँ, दे नीड सम मनी सुस्टेन। टू गेट द ड्रग। हाँ, उसके बाद में घर में लड़ाई शुरू हो जाती है पैसों के लिए, पैसे चाहिए हमें ड्रग्स लेने के लिए, गेट वायलेंट एट टाइम्स। उसके बाद में चोरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं जस्ट टू गेट सम मनी टू बाई सम ड्रग्स। तो वैसे बहुत सारे सिचुएशंस हैं, मतलब बच्चे चोरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं वैसे, मतलब एंड द वायलेंस घर पे टाइम के, हमें पैसा चाहिए और हमें ड्रग्स करना है। आई थिंक इज, एंड ऑल्सो द थिंग इज मेनी ऑफ द फैमिलीज हैव देयर, लाइक क्या बोलते हैं, उनके चाइल्ड ही, मतलब उनका बच्चा ही उनका एक होप रहता है कि उन, मतलब वो कुछ दे करेंगे विल आगे चल चेंज के। द फ्यूचर, क्या, हाँ। हाँ, इन द फ्यूचर। पर थिंग इज वही बच्चा अगर क्या बोलते हैं इस चीज में इन्वॉल्व हो गया, इट इज लाइक लाइक देयर होप्स आर ऑल, क्या बोलते हैं, शैटर्ड, हाँ, होपलेस shattered। फील करेंगे वो, करेक्ट। Yeah। तो यहाँ पे आपने ये बताया कि नाउ इवन द लोकल पीपल आर स्टार्टिंग टू मार्केट इट, मतलब एक ही दूसरे को बता रहे हैं, हम्म। इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब ये प्रोसेस कैसे हुआ, लाइक हाउ आर दे गेटिंग एक्सेस टू ड्रग्स, और अब कौन से ड्रग्स की स्पेसिफिकली बात करें, बिकॉज अगेन हीरोइन, LSD ये सारे इजीली अवेलेबल नहीं है, इलीगल है हाँ, completely। तो फर्स्ट कौन से ड्रग्स की बात हो रही है, और वो इतना इजीली कैसे एक्सेस हो रहा है इनके पास? ये क्या है, लाइक देयर वाज पहले से भी था एक नेटवर्क जहाँ पे ड्रग्स पेडल होते थे, और सब अब वो चलता ही रहता था। अब तक ऐसा नहीं है कि आज ही हमारे सोसाइटी में ड्रग्स आया है, पहले भी चल रहा था। बट द थिंग इज नाउ, द थिंग इज दे हैव स्टार्टेड रिक्रूटिंग द, क्या बोलते हैं, रेसिपिएंट्स। तो जो ले रहे थे ड्रग्स अब तक, उन्हीं को जो है एक क्या बोलते हैं, एक पेडलर जैसा बना दिया है एक एरिया में लेवल पे। और हम लोगों ने कहीं कहीं जहाँ पे ये भी सुना है कि एक 1000 रुपीज पे करते हैं पेडलर को, जो बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है उसको 3 या 4, मतलब फेस डीलिंग विद टाइडॉल, उसको 3 या 4 टैबलेट देते हैं दिन का। ओह। तो ही कैन यूज, क्या बोलते हैं, दोस्त पर हिज पर्पस। एंड उसके बाद में उसको 1000 रुपया पैसे और एक बिरयानी, समथिंग समथिंग। इट इज लाइक वी हैव हर्ड दिस लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, ऐसा ऐसा, मतलब रिक्रूटमेंट स्कीम चल रही है, मतलब बहुत सारे एरियाज में ऐसे। एंड देन दे जस्ट स्टार्ट, पहले खुद ही वो अब्यूज करना शुरू कर देते हैं ड्रग्स, एंड हाँ। देन ऑटोमेटिकली डिपेंड होने के बाद खुद खरीदते हैं, देन दूसरों को यस, भी बेचना शुरू करते हैं। यस, 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 यस। एंड कॉमन साइंस क्या होती है जो इंडिकेट करता है कि ड्रग यूज है? आपने जैसे बताया कि तो वो लोग फुल स्लीव्स टी शर्ट्स पहनना शुरू कर देते हैं, रेड आइज है, उसके हाँ, अलावा और क्या साइंस कॉमन? मतलब एग्रेसिव एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, मील स्किप करना शुरू कर देते हैं। मतलब उनको ऐसा आता है कि मतलब मतलब 2 दिन भी ना खाओ तो वो ना, मतलब अपने नशे में, मतलब वो खुश रहते हैं। और कभी कभी मतलब दे विल बी ऑलवेज स्लीपी, मतलब सो जाते हैं कहीं पे, दिन दिन सो जाते हैं लेने के, क्या बोलते हैं, आफ्टर, क्या बोलते हैं, कंज्यूमिंग। आप, हाँ, द या, कंजम्पशन। और लॉन्ग आवर्स स्पेंडिंग इन टॉयलेट्स, लाइक क्या बोलते हैं, अपने ही जोन में रहना। मतलब बहुत सारे ऐसे हम लोग, मे बी देर आर मोर, बट द थिंग इज व्हाट वी हैव फाउंड आउट ऑफ दिस, दिस आर द मेन रीजंस, लाइक, कॉमनली या, जो या, स्लम्स कम, एरिया। या, साइंस। ऑल्सो ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट दैट स्टूड आउट, या जो एकदम अलग था आपके एक्सपीरियंस में अभी तक इन योर वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस? आई हैव हर्ड फ्रॉम माय टीम मेंबर्स हु विजिट, उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे हेपेटाइटिस सी के केसेस बढ़ गए हैं इसके वजह से। तो व्हाट हैज हैपेंड इज, ये जो, क्या बोलते हैं, जो जो इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन जो यूज करते हैं, दे शेयर द इंजेक्शन इन बिटवीन देम। ठीक ओके। है, तो उससे उसकी वजह से वो हेपेटाइटिस सी के केसेस आ जाते हैं। और फॉर एग्जांपल मेनी ऑफ देम, क्या बोलते हैं, जो इंजेक्ट करते हैं, वो इंजेक्ट इतना किए होते हैं कि हाथ उनके एकदम, मतलब सड़ने के लेवल पे आ जाते हैं समटाइम्स, ओ। लाइक द स्वोलन हैंड्स, बिकॉज उसके लिए तो फुल टी शर्ट पहनते हैं, लाइक इट विल बी हाँ। वेरी बैड फिजिकली भी, इफ यू सी इट विल बी वेरी बैड। एंड थिंग इज, उसके बाद में बहुत सारे केसेस हम लोगों ने, मतलब, सुने हैं, बट आई हैव नॉट एनकाउंटर्ड इट पर्सनली बिकॉज, या, आई डोंट। ऑल्सो व्हाट कैन पीपल डू, अगर जैसे कोई अब्यूज़ कर रहा है, मैं अगर सपोज उनको जानती हूँ, तो हाउ कैन पीपल हेल्प देम? क्योंकि किसी को ऐसे सीधा मना करने से तो ऐसे नहीं है कि स्टॉप हो जाए।
तो उनको कैसे हाँ हेल्प किया सी जाता है? अभी तो हम जैसे हम अभी क्या करते हैं, सी यू जस्ट नीड टू फैसिलिटेट देम विद द एक्सेस। फॉर एग्जांपल वी हैव स्पोकन टू लॉट ऑफ डॉक्टर इन निम्हांस। निम्हांस में एक डी एडिक्शन का उनका एक कैंपेन चलता है, बट आई थिंक देयर प्रॉब्लम इज उनको मतलब फील्ड पे जाके उनको एक्सेस नहीं मिलते रहती। तो उनको वहां पे तो क्या बोलते हैं, वो वहां से उनको भी पता नहीं चलता कि कौन से एरिया में जाके कहाँ पे काम करे। हम्म। लाइक वी आर बीइंग द ब्रिज बिटवीन दैट एंड एनीवन हु इज अवेयर अबाउट इट, क्या बोलते हैं, ये जो क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर। दे आर जस्ट बीइंग, दे कैन बी ए ब्रिज बिटवीन द क्या बोलते हैं, द पीपल हु वांट पीपल टू एंड फैसिलिटेट फॉर दिस एंड एक्सपर्ट्स। द रेसिपिएंट, या वही हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी जस्ट ट्रैवल, जस्ट विजिट, we just visit this areas and we just see के कहाँ कहाँ पे हमें अवेयरनेस कैंप्स चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, वी गो टू, वो क्या बोलते हैं, निमहांस, वी गो टू स्पीक टू द डॉक्टर्स देयर एंड से दैट वी नीड दिस, क्या बोलते हैं, यहाँ पे अवेयरनेस कैंप चाहिए एक। तो if a doctor comes and speaks, they have more to speak about it या and more to, क्या बोलते हैं, explain to the parents, and so उसके लिए हम लोग वहाँ पे जाते हैं। and with that the access, for example, it is not only de-addiction centers, you can do it like, it is not IPD, it's like inpatient admit करना ही जरूरी नहीं है बहुत सारे केसों में। बहुत सारे केसों में इट कैन बी ओपीडी, लाइक आपको क्या बोलते हैं, सिर्फ आपको जाके एक दिन में, वीक में एक दो तीन बार जाना है। निमांस विजिट्स हैज दैट सच होती है, हाँ। प्रोग्राम, या हाँ विजिट्स होके कर सकते हैं। तो हम्म, दैट, फॉर दैट अवेयरनेस, वी अभी वैसा अवेयरनेस हम लोग कर सकते हैं। बट व्हाट मतलब कैन करते थे। फैमिली डू? जैसे फैमिली फ्रेंड्स है, ये तो आपके लेवल पे अवेयरनेस होता है, बट फैमिली फ्रेंड्स अगर किसी को जानते हैं कि जो ड्रग अब्यूज कर रहा है, वो क्या कर सकता हम्म। है? फर्स्ट इज, देखिए, पहले तो जो है, आप अगर उनको रोकेंगे, लाइक नो वे, लाइक दे आर हम्म। गोइंग टू स्टॉप। द थिंग इज, इट इज जस्ट दैट के उनको लाइक एक चेक में रखना कि क्या चल रहा है, किधर चल रहा है। द थिंग इज कंसल्टिंग, टेकिंग देम टू द साइकेट्रिस्ट और टेकिंग टेकिंग देम टू द डॉक्टर, मतलब वो बहुत विद, इट कम्स विद रेजिस्टेंस, इट इज नॉट इजी that you can just they will agree to you to come to the hospital, या but वो एक हाँ। resistance तो रहेगा ही। but the thing is, but you the thing is you just वो intervene करना ही पड़ेगा, because it is not an easy way हाँ, सो to फर्स्ट इज टू टेक क्या देम टू अ क्या क्या एक्सपर्ट और take them to सम हेल्प। expert, या some help is very much required, because वही बताएंगे कि क्या लेवल पे, मतलब इनका इन्वॉल्वमेंट में कितना, मतलब टाइम पीरियड भी बता सकते हैं। if they are recently involved in it, it is very much easy to get out of it। if they are in the thick, and the thing is उसके लिए लंबा टाइम लगेगा, और उसके लिए फैमिली को भी रेडी होना मतलब पड़ेगा कि ठीक है भाई, जब तक we need to mentally get prepared that के हम लोगों को इतना टाइम देना है इनके पीछे। और इसके अलावा जैसे कैसे उनको इमोशनली सपोर्ट किया जा सकता है? अगर लेट्स से एक्सेस बंद कर दिया, फैमिली ने आइडेंटिफाई करके एक्सेस बंद कर भी दिया है, अ, जी, तो और कोई तरीके से जो इमोशनली फिजिक सपोर्ट कर सके उनको? देखिए, द थिंग इज, तो हम हमारे केस में तो व्हेन वी द slums which we are working in, it is all about the environment which you give them। okay, हम्म। so that is the major thing which you have understood। तो हम लोगों ने क्या किया है, थोड़े क्या बोलते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं, ग्रुप्स हैं, तो स्पिरिचुअल लीडिंग, जो जिस जहाँ पे आपको स्पिरिचुअली थोड़ा आपको क्या बोलते हैं, ले जाया जाता है बाहर, मतलब एक सोसाइटी से आपको निकलना पड़ता है, तभी हम्म। आप उससे क्या बोलते हैं, एक मतलब दूसरा आप समझ हाँ, सकते हैं। आप एक ही चीज में ऑप्शन हैं। मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप चीकड़ में रहकर ही आप कितना भी धो लें आपको, हम्म। कि आप चीकड़ में ही ठहरे हुए हैं, तो कितना भी धोएं आपको, पहले आपको वहां से निकलना है बाहर थोड़ा। ठीक है, आपको वहां से निकलने के बाद में तो आप अगर आप अपने आप को क्लीन करेंगे, देन यू आर लाइक इन बेटर पोजिशन टू हाँ। क्लीन योरसेल्फ। सो वो एक एनवायरनमेंट देना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट दैट लाइक कि उनको घर में बिठा ले, घर में बिठा ले तो वही तो प्रॉब्लम थी पहले भी, घर में बैठने से, अकेले रहने से। क्या जो इंसान मतलब, सी फॉर एग्जांपल, देयर इज अ गुड, क्या बोलते हैं, एग्जांपल ऑफ वन रैट वाज, क्या बोलते हैं, गिवन दिस, उसको उसको केज में बंद करके दो तरीके के पानी रखे थे, एक नॉर्मल पानी, एक एडिक्टिव पानी।
वो पीता रहा एडिक्टिव पानी से, वो मतलब एक एडिक्ट हो गया वो, बट हम्म। उसको लेके आके एक दूसरे जुओं के साथ बंद कर दिया जहाँ पे बहुत सारे बॉल्स हैं खेलने के लिए, छोटे छोटे बॉल्स वहाँ पे। देन ही फॉरगॉट अबाउट दिस एडिक्टिव वाटर because he got busy with something अदर else. थिंग। So yeah, so the thing is when you don't have anything, to क्या बोलते हैं, think work outside, you go inside. When you go inside, you have this cravings, about to क्या बोलते हैं, take drugs, and it is environment plays an important role in क्या बोलते हैं getting out of this. This is what we have understood, सो and वो उनके देना पड़ेगा फैमिली को। हाँ, मतलब उनको इमोशनली सपोर्ट, कोई दूसरी डिस्ट्रैक्शंस जिसके हाँ, अकॉर्डिंगली वो काम कर यस यस, सके, टू घर हेल्प में देम। बिठाना इज नॉट अ सोल्यूशन जी। ओके, एनी अदर लास्ट मैसेजेस फॉर यंग यूजर्स जो ड्रग से आई जिनको एक्सपोजर हो या जिनको पता हो, एनीथिंग फॉर देम, मैसेज फॉर देम? Not for them, maybe for from the society in the whole. The thing is, see, we society के यूथ ही उसका क्या बोलते हैं, एक पिलर्स होते हैं, मतलब उससे ही पता चलता है कि सोसाइटी कहाँ पे जाएगी करके, मतलब आप इफ यू वांट टू क्या बोल डिस्ट्रॉय सोसाइटी, यू जस्ट नीड टू डिस्ट्रॉय देयर यूथ and indulging in this type of or any type of addiction, they're destroyed. The thing is, the major message is for the society that we need to play an important role now, so that it क्या बोलते हैं, हमारे सोसाइटी, क्योंकि हमें यहाँ पे बड़ा होना है, हमारे बच्चों को ही यहाँ पे बड़ा होना है, और इसको आज हम कैसे उसको बनाते हैं या फिर उसको कैसे हम लोग क्या बोलते हैं गार्ड करते हैं, वही डिटरमाइन करेगा कि फ्यूचर उसका कैसा होगा। तो दिस इज द मेजर थिंग, एंड इट इज अगेन आई वुड सजेस्ट क्या क्या बोलते हैं, डी एडिक्शन अपने लेवल पे काम करेगा, पुलिस का क्या बोलते हैं, द गवर्नमेंट का अपना स्ट्रिक्टनेस ऑन द क्या बोलते हैं ड्रग अपने लेवल पे काम करेगा, सब अपने लेवल पे काम करेगा। द थिंग इज सोसाइटी का जो डर और वो जो एक होता है, वो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कलेक्टिव दिस कॉन्टेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जब तक वो चला गया तो लोग ना अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे, अपने मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी। The thing is, because in Khalasi Parli, one of the best example, now the peddling has stopped there in that area, because most of like एक अच्छे लेवल पे स्टॉप हो गई, क्योंकि द सोसाइटी इज सो क्या बोलते हैं विजिलेंट नाउ। दे आर लाइक रात में राउंडिंग्स पे निकलते हैं लोग, जो लाइक क्या बोलते हैं द एल्डरली ऑफ द क्या बोलते हैं दिस कम्युनिटी। कम्युनिटी, दे आर दे गो आउट, दे सी के ऐसे बच्चे कहीं पे बैठे नहीं है, कोई भी ट्रक पेडल नहीं करा, पेडलर्स को तीन चार पेडलर को उन्होंने मतलब अरेस्ट करवाया है। ठीक है, नो, इट इज जस्ट दैट कि वी नीड टू बी विजिलेंट अबाउट इट, एंड इट इज सोसाइटीज पार्ट, दे शुड प्ले, एंड सबका अपना अपना एक पार्ट होता है प्ले करने का, दिस इज सोसाइटीज पार्ट एंड दिस इज वेरी मच नीडेड। क्योंकि पुलिस को जाके गवर्नमेंट को जाके बोलेंगे वो एक इन्फोर्समेंट करेंगे ड्रग टी एडिक्शन सेंटर से, वो अपनी जगह पे चलते रहेंगे, सब चलते रहेंगे, बट दिस इज वी नीड टू टेक एज अ responsibility and work on it, is a thing which I want to say. थैंक यू सो मच।